Hello my dear student, welcome you here in this lecture number 81 for that topic sexual reproduction in flowering plants. Now we have been learning regarding the types of pollination according to the agencies of pollination. Two types of agencies we discussed in the last lecture, abiotic yani non-living and biotic means the living. Okay, abiotic में दो है, which are that two? Water and wind. Out of that wind pollination we have discussed in the last lecture. Special characters are shown by the plant called as the anemophilous plant because that process is known as what? Anemophily. Anemos means wind. So wind pollination जो करते हैं उन्हें कहते हैं anemophilous plant. And what special characters they show that we discussed in the last lecture. Okay, do you remember something? That feathery stigma. Then the anthers are versatile. Versatile means which can swing very easily in the wind current. And stamens raise at high level. Abundant pollen grains are produced like that. Okay. Now the another abiotic agent is water. We have to learn the water pollinated plants. So pollination by water, water pollination. That plants are showing some specific characters called as the adaptations for hydrophily. Now one thing I would like to clear here, that water pollination or hydrophily is shown by a very limited number of the plants. Only 30 genera are there out of so huge number, isn't it? Only 30 genera are there which are showing hydrophily. No doubt they are aquatic plants. Okay. And second thing is that mostly monocots, whatever the plants showing there, they are of that particular class monocotyledony. Okay, they are monocotyledons. So that character you have to remember. That may be asked in the form of MCQ. What number of genera show water pollination in the flowering plants? Correct answer is 30. Okay. Mostly which type of the plants show hydrophily? Correct answer is there, that monocot plants. Monocot and dicot not equal. And at the same time you should know one more thing. These angiosperms or flowering plant is a evolved group. Highly evolved group. Top पे है, isn't it? But the lower plants were algae, bryophytes, pteridophytes. वो थैलोफाइटा आपको मालूम है ना, अलगी है, देन ब्रायोफाइटा है, देन टेरिडोफाइटा है, देन स्पर्मेटोफाइटा है. स्पर्मेटोफाइटा with gymnosperm, angiosperm. That classification you know. So lower plants like algae totally aquatic थे. Then bryophytes amphibian, वाटर में भी रह सकते हैं, लैंड पे भी रह सकते हैं. एंड देन टेरिडोफाइट्स ट्रूली टेरिस्ट्रियल प्लांट्स, ये भी हमको हिस्ट्री मालूम है. बट इन द अर्लियर थ्री ग्रुप्स यू फाइंड दैट फॉर पॉलिनेशन पर्पस और फॉर फर्टिलाइजेशन पर्पस water was very, or water is very, very essential. Without water that fertilization is not possible. And that's why the limited distribution of bryophytes and pteridophytes is there, क्योंकि पानी पे उसको निर्भर रहना पड़ता है. For carrying out the sexual reproduction, water is essential. वो ड्रॉप भर क्यों ना हो, चुल्लू भर पानी हो तो भी चलेगा, but that is required there. In total dry condition is not possible. Okay, तो एंजियोस्पर्म ने तो बहुत सारा हिस्ट्री करके दिखाया है, that we know. And that's why already plant ग्रुप जो वो पक गया था वाटर से, isn't it? आप जैसे पक जाते हैं बार बार टीचिंग करने से या लर्निंग करने से, वैसा है, isn't it? अरे बहुत पका था, लाइक दिस, ऐसे कहते हैं ना, वैसा. तो ये प्लांट्स जो है वो पक गए थे और उनको वो फेड अप हो गए थे वाटर से, उनको वाटर से दूर जाना था. एंड दैट्स व्हाई नाउ इन एंजियोस्पर्म्स very few
रिटेन दैट ग्रेटिट्यूड ऑफ वाटर, क्योंकि उनके एंसेस्टर्स जो है अलगी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, दे वर एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन वाटर, तो उन्होंने सोच लिया अभी बहुत हो गया, पर ठीक है थोड़ा ग्रेटिट्यूड हम भी संभालते हैं, एंड हार्डली 30 जनरा आर देयर who are showing that water pollination. Now there are two types of the water pollination particularly. That one is there, that is hypohydrophily, and other is there epihydrophily. Hypohydrophily is shown by the that plants under the surface of water. Under the surface of water. Okay. यानी दिस शोन बाय पर्टिकुलरली बाय सबमर्ज्ड प्लांट्स, जो प्लांट्स अंदर पूरे घुसे हुए हैं, पानी के अंदर ही, ऊपर नहीं आते हैं, एंड दे प्लांट्स एग्जांपल आर लाइक दैट सी ग्रासेस, झोस्टरा इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर दैट. ये प्लांट्स अंदर ही रहते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे आर शोइंग दैट. ओके, हाइपोहाइड्रोफिली. हाइपो का मतलब बिलो, हमें मालूम है, हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन, हमें तो हाइपर ज्यादा मालूम है, इजंट इट. हाइपो मीन्स लोअर, हाइपर मीन्स मोर. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दैट प्लांट्स आर एक्वेटिक, नो डाउट, दे आर सबमर्ज अंडर द water there, and that's why the pollination occurs under the surface of water. And epihydrophily means pollination occurs on surface of water. It occurs on surface of water. Okay. So plants are aquatic, no doubt, but at the time of pollination the female flower comes up, male flower also comes up, and on the surface of water that takes place. Okay. अब इसमें आप बोलेंगे वाटर हायसिंथ, वाटर लिली, लोटस, ये भी वाटर सरफेस पे है. तो रादर देन ऑन सरफेस ऑफ वाटर, दे आर टेकन uplifted water, they are totally above the water, the flowers, in air mostly. So they are not showing hypo or epihydrophily, they are actually pollinated by insects. They are actually pollinated by insects. तो ये गलत फहमी हो जाती है बहुत बार स्टूडेंट्स की, इस वजह से मैंने यहाँ पे लिख के दिया है. Which of the following show hydrophily? तो उसमें समझो दिया है वाटर हायसिंथ, वाटर लिली, लोटस, नन ऑफ दीज. तो बहुत बार स्टूडेंट समझते हैं ये गलत क्वेश्चन है, पूरे तो एक्वेटिक प्लांट्स है, नन ऑफ दीज आंसर कैसा आएगा? सो दैट ऑल ऑफ दीज शुड बी दैट डी ऑप्शन. वो गलती किया है तो हमको मार्क मिलने वाले हैं ऐसा लगता है, बट नो माय फ्रेंड्स, द क्वेश्चन इज करेक्ट. नो डाउट दे आर एक्वेटिक प्लांट्स, बट दे आर नॉट शोइंग वाटर पॉलिनेशन, दे आर शोइंग इंसेक्ट पॉलिनेशन. ये कमल का फूल जो है उसका और जो भृंगराज है, भ्रमर, उनका रिलेशन तो इतना फेमस है. सो मेनी पोएट्स हैव मेड पोएम देयर. कितने तो भी शायरों ने उनके ऊपर शायरी की है. हमें वाले में वो पूरा बंद हो जाता है और अंदर ही अंदर भ्रमर जो है वो पूरा रह जाता है. एंड ओनली इन द मॉर्निंग इट ओपन्स, एंड देन दैट पर्टिकुलर इंसेक्ट गोज अवे. ओके. तो ये जो है दैट स्टोरीज आर देयर इन द लिटरेचर, सो मेनी पोएम्स आर देयर. तो वो तो इंसेक्ट पॉलिनेशन ही बताता है, लोटस, इजंट इट? तो ये ध्यान में रखो. नाउ चलो इसमें क्या क्या होता है देखेंगे हम. पर्टिकुलरली इन बोथ द टाइप्स ऑफ द प्लांट्स वी फाइंड दैट इन बोथ द epi and hypohydrophily some common things are there, that mostly flowers are unisexual. Mostly the flowers are unisexual. That means male and female flowers are separate. Male and female flowers अलग अलग होते हैं. Okay.
Then second thing is that pollen are produced in large number. In large number. बहुत ही भारी मात्रा में पोलन ग्रेन्स को तैयार करना पड़ रहा है. ऑब्वियस है, because considering the wastage there. Okay. Then another important thing is that the pollens should be light. वो लाइट ही होना चाहिए. And they should not be get wetted. They should be, pollens are coated by mucilage, lubricant material. They are coated by mucilage. Okay. And are kept unwetted. Do not get wetted. Okay. तो ये जो है उनको पानी से कुछ उसका इंजुरी नहीं होना चाहिए, इसलिए दे आर कवर्ड बाय म्यूसिलेज. आपको मालूम है हमारी जो स्किन है वो भी वाटर प्रूफ है. देखो ना, आप नहाते हैं नो डाउट, पर पानी अंदर थोड़ा जाता है स्किन से. नहीं तो नहाने के बाद तो पूरा हम ऐसा स्वोलन फॉर्म में बाहर आते थे, इजंट इट? वैसा नहीं होता है, देखो कभी. तो जस्ट द स्किन गेट्स वेटेड देयर एंड देन वी आर जस्ट मेकिंग इट ड्राई. नहीं तो अपने आप भी ड्राई हो जाएगी वो, बिकॉज वाटर इज नॉट पासिंग इनसाइड. आप कहेंगे ऐसे कैसे कह रहे सर, वहां पे तो स्वेट पोर्स है. स्वेट पोर्स से तो वो अंदर आना चाहिए वाटर. नो माय फ्रेंड, स्वेट पोर्स बहुत सारे हैं, हमें मालूम है. बट एट द सेम टाइम आवर skin is getting coated by one of the oily substance known as sebum. sebum नाम का एक, आपने पढ़ा होगा, sebaceous gland नाम का एक gland है, that produces that secretion which is oily called as the sebum. So when sebum comes up, it is all over the skin. उससे भी पता चलता है हमारी स्किन का टेक्सचर कैसा है. रिमेंबर, कई लोगों में सेबम बहुत ही ज्यादा तैयार किया जाता है. एंड व्हेन सेबम इज प्रोड्यूस इन वेरी लार्ज नंबर, लार्ज प्रोपोर्शन आई विल से, द स्किन बिकम्स वेरी मच ऑयली. ये श्रीलंकन पीपल आप देखो, या हमारे साउथ इंडिया में देखो, ऐसे ऑयली स्किन वाले ज्यादा लगते हैं, इजंट इट? तो वो जो है वो बिकॉज सेबम इज मोर. एंड इन सम पीपल sebum becomes very less, तो उनकी स्किन ड्राई हो जाती है, तो उसमें क्रैक्स भी आ सकते हैं. ओके, सो आवर स्किन इज waterproof. Just like that, these pollens are also waterproof, I will say. So these are the common characters. Now अब दोनों में फर्क क्या है देखो. In Zostera the plants are submerged, so female flowers when get open, the male flowers, they have been released earlier from the plant. They migrate here and there around that female flower, and here the pollen grains are particularly ribbon like. इनके जो pollen grains है वो कैसे है? Ribbon like. So in which of the following plant ribbon like pollen grains are there? Correct answer is Zostera. So they coil around the female flower, around the stigma, and then the pollination is effective, isn't it? So ribbon like pollen grains, and that occurs under the surface of water, not on the surface. पानी के अंदर ही हो जाता है Zostera में. In case of Zostera और sea grasses कहते हैं उसे, isn't it? और ये वैलिसनेरिया का भी बहुत इंटरेस्टिंग है. उनका जो फीमेल फ्लावर का जो स्टॉक है पेडिसेल, दैट इज स्प्रिंग लाइक. एक्चुअली ये फीमेल फ्लावर का ये जो पेडिसेल है ऐसा स्प्रिंग लाइक है एक्चुअली उसका, isn't it? And the flower is like this. सपोज एक डायग्रामेटिक मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पे, एंड वाटर लेवल इज लाइक दिस. यहाँ पे वाटर लेवल है. Okay, and then what you find that
Vallisneria, etc. That plant I am showing. Okay, ये फीमेल फ्लावर. अब मेल फ्लावर जब रिलीज हो जाते हैं, मेल फ्लावर्स ते पहले रिलीज हो जाते हैं एंड देन दे कम ऑन द सरफेस. ओके, छोटे छोटे टाइनी मेल फ्लावर्स है, दे कम ऑन द सरफेस देयर. ओके, दे आर रिलीज फर्स्ट. तो उसके बाद में एट मैच्योरिटी व्हाट हैपन देयर, दिस स्प्रिंग लाइक पेडिसेल गेट्स अनकॉइल्ड. टोटली अनकॉइल हो जाता है. अनकॉइल होने के बाद दिस इज पर्टिकुलरली आई विल शो लाइक दिस. व्हेन इट विल बिकम अनकॉइल, it will raise the flower like this up to the surface. सही है? यानी just because of the uncoiling nature of that. ये जो spring था, spring like action takes place, highly coiled, it becomes uncoiled and raises the female flower up on the surface. Okay, and there the male flowers gather around them. And because of that, male flowers may come there. यहाँ पे फिर एक बार केमोटैक्सी कहते हैं उसे, chemical attraction, and they can carry out the pollination. But remember, my friend, the difference in hypo and epihydrophily is that in epihydrophily, the pollen grains are transferred on the stigma of the flower on the water surface. EP में, EP यानी above. And in hypohydrophily, it is transferred on the, what to say that, under the surface of water. So these are the adaptations and characters shown by the plant. इसमें दोनों भी words अच्छी तरह से ध्यान में रखो. I'm sure you will get it and you will get the answer also if it is asked. So many times MCQs will be possible on that. So these are the two abiotic agents we have discussed so far. Water and wind. Now very interesting is the entomophily or insect pollination. The biotic agents we know. Biotic agents में तो particularly insects ही सबसे ज़्यादा प्रभावी है. Biotic agents of pollination. Biotic agents of pollination. ओके, सो ये पर्टिकुलरली एनिमल्स ही है, मैंने आपको कहा था. एंड इन दैट एनिमल्स मोस्ट कॉमन आर द इंसेक्ट्स. ओके, देन अनदर आर द बर्ड्स, टू सम एक्सटेंट दे आल्सो कैरी आउट. देन अनदर आर द bats, and very few are there snail also. और अब हम जब हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपीरियंस करते हैं, सो वी आर आल्सो देयर कैरिंग आउट दिस. ओके, इंसेक्ट पॉलिनेशन सबसे ज्यादा है. द मेजर पॉलिनेटिंग एजेंट्स, द मेजर पॉलिनेटिंग एजेंट्स इन फ्लावरिंग प्लांट्स आर, करेक्ट आंसर क्या है? इंसेक्ट्स. Almost 80% of the flowering plants, angiosperms, they show insect pollination. And you know that insecta is a very large group there. And that involves so many type of insects. अलग अलग type के insects हैं. And that's why insect pollination, insects में अभी सबसे ज़्यादा most common agent कौन से हैं? Most common insects carrying out this pollination, वो कौन से हैं? Bees are the chief. Almost 75% insect pollination is carried out by the bees, madhumashi. Remember that honeycomb you must have studied. Apiculture you must have studied. Apis कहते हैं उन्हें. That they are most busiest type of insects. और उनकी वजह से ही पूरा ये फुला जो फ्लोरिकल्चर है वो उनकी वजह से ही है. बट ह्यूमन बीइंग्स आर सो क्रूएल दैट दे आर किलिंग दैट हनी बीज. ओके,
तो हनी बीज में भी 3 देखते हैं हम, क्वीन, then drones and the workers. So worker type of honeybees are most common there. They go to every flower. They collect the insect nectar, convert that nectar into the honey. Okay. And then that honey will be used as a food material by that developing embryos, by the developing young bees in that honeycomb. That you know. सो बीज आर मोस्ट कॉमन. फिर उसके बाद में दूसरे जो इंसेक्ट्स हैं उसमें बटरफ्लाइज है, isn't it? Then some other are also there. बटरफ्लाइज के साथ साथ वहां पे वैस्प भी आते हैं. Then particularly that beetles are also there. भुंगा ज्याला आपण म्हणतो, beetles, isn't it? Then wasp are also there. So many other insects are also carrying out that pollination there. Okay, so particularly try to learn this all. इसके जो adaptations insect pollination के हैं, they are also very very important that we shall discuss no doubt in our next lecture. So do give the likes and the shares to this video and do subscribe to my XIIth Biology channel if still you are not subscribed, so that every day you will be getting one MCQ there. जो नीट देना चाहते हैं उनके लिए तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा है. That try to answer the MCQ, try to learn from that MCQ. और जनरली जो एग्जाम में आने वाले MCQ वो देता हूँ मैं, तो आप उसके ऊपर जाओ, मेरे MCQ भी देखो. एवरी डे वन MCQ इज देयर. ओके, सो डू गिव द, एंड ऑल्सो यू कैन सब्सक्राइब XIIth केमिस्ट्री चैनल. वहाँ पर भी शॉर्ट्स होते हैं, वहाँ पर भी मेन लेक्चर्स होते हैं. ओके, सो डू सब्सक्राइब बोथ XIIth केमिस्ट्री एंड XIIth बायोलॉजी चैनल. We'll meet you again in the next lecture. Thanks a lot.